Hi friends, how are you doing today? Thanks for joining me for this video. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे how to handle MCQs. No doubt, MCQ is the most difficult question type in the IELTS, no matter IELTS General or IELTS Academic. IELTS Academic कुछ ज़्यादा इसलिए क्योंकि जो कुछ पैसेजेस ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन स्टेटमेंट भी काफ़ी ट्रिकी होता है एंड देन दी फोर ऑप्शंस are quite lengthy and there is a use of complicated language जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है उनको अटैम्प्ट करना. This video contains 4 questions that you have to attempt, but for that I'm going to share a strategy with you, an idea with you. It's definitely going to help you in handling these questions in a much easier way, or definitely it will improve your accuracy as well. आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा. अगर आपको MCQs में स्कोर अच्छा करना है देन यू हैव टू डेवलप वन हैबिट कि एज़ यूजुअल जो स्ट्रेटजी मैं हर एक क्वेश्चन में बताता हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में. स्पेंड मोर टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन अगैन एंड अगैन और बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए. जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आप सभी स्टूडेंट ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आई हैं एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपको किसी भी हालत में उसके बाद ऑप्शंस को रीड नहीं करना है. आई रिपीट, आपको बिल्कुल भी ऑप्शंस की तरफ ध्यान नहीं देना है क्योंकि अगर आप पहले ऑप्शंस रीड करोगे तो उसके बाद होगा क्या कि जब आप पैसेज में पढ़ने जाएंगे तो हर एक ऑप्शन का ऑलमोस्ट एक या दो वर्ड आपको उस पैराग्राफ में नजर आएंगे. यू विल बी कम्प्लीटली कंफ्यूज कि आप कौन सी ऑप्शन चूज़ करें. अभी आपको करना क्या है, आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है और पैराग्राफ का वो पार्ट लोकेट करना है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स आए हैं और वहाँ पर आंसर हो सकता है जो सेक्शन मैं आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड करता हूँ. अब उस पूरे पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और समझिए. देन यू कम to the other part where the options are, but before you move you ask yourself कि आपने जो भी पढ़ा उसकी समरी क्या है. एंड देन जो पैराग्राफ पढ़ के आपको समझ में आया उसको ध्यान में रखते हुए आपने आंसर नहीं ढूंढना है. आई रिपीट, आपने आंसर नहीं ढूंढना है, आपने रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है. एक एक करके देखिए कि कौन सी ऑप्शन है जो वो बात नहीं कर रही है जो आप उधर से समझ कर आ रहे हो या पढ़ कर आ रहे हो. One by one you will see the options will get eliminated. In fact, एक ऑप्शन तो बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दो ऑप्शंस में अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ज़्यादा सही ऑप्शन है और वहीं पे सारी मेहनत है क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप है ही डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ meant for students who are targeting 6.5 or above. I hope this strategy will really help you in handling the MCQs now. Just keep the 4 steps in your mind. The first step is read the question and understand it. Step 2, move to the part of the paragraph where the answer is. Step 3, read the paragraph, don't look at the options. Read the paragraph and understand and come up with a summary. And finally, number 4, eliminate the wrong options and get to the correct option. I wish you all the very best for this exercise now, and let's start the test. And by the end of this test, I request you to please share your score with me and tell me how effective you find this idea of handling MCQs.
Hello, my dear friends. I'm here to tell you about the interactive reading tests that are available absolutely free of cost. You need to download Ielts coaching application, and iPhone users download ClassPlus app. Now I will tell you how you can attempt these tests that are available on Ielts coaching application. Once you download, you will see the application something like this, and you need to click on the store option at the bottom. Now click Reading Practice Interactive Test, and it is absolutely free. Click on the content and it will show you all the free tests inside. We are going to try true, false, not given, and there are many. Let's choose one out of these: space, travel, and health. You need to press next here, and on this screen this checkbox, and now click attempt test. The test is in front of you. Read the question, find it from the passage, and choose the one: true, false, not given. Once you attempt the entire test, submit your score, and then you can check your score, how you performed, and if you have committed any mistake, you can check the explanation of wrong answers. How was that, my friends? And I'm telling you, it's going to be very helpful for you. Now, don't waste the time and download Ielts coaching application right now and improve your reading.